आई थिंक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी इज़ द सेल्फ इमेज, कि आप अपने बारे में ट्रूली क्या राय रखते हैं, कि आप अपने आप को पसंद भी करती हैं। इसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये होता है कि द थॉट्स दैट यू थिंकिंग, ट्राई राइटिंग देम डाउन। और एक लम्हे के लिए देखो कि अगर ये बातें जो मैं सोच रही हूँ, कोई दूसरा शख्स अगर मुझे कह रहा होता, तो क्या मैं उससे कोई ताल्लुक भी रखना चाहती, क्या मैं उससे कोई दोस्ती रखना चाहती? बिकॉज इफ समबडी कीप्स टेलिंग यू ओ you're फैट और you're incompetent और you're lazy, या जो भी वो परसीव फ्लॉज की बात कर रहे हैं, that's such a negative impact on you। तो सोचो, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी है, आई मीन माई सेल्फ, वो ही जब ये नेगेटिव बातें कर रहा हो तो फिर क्या बचेगा? बट आई एम श्योर कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल। कभी कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो क्या करती हो? अच्छा, negative ख्याल is I try to keep myself busy and focus on the positive side, you know. I've read this beautiful quote somewhere which was like, your life is 10% what happens with you and 90% is how you react to it. Beautiful. So yeah, so I have been that kind of a person where I've been more focused towards how I react to things. So if I'm positive, I'm thinking positive, I'm eating healthy, I'm doing exercises, you know. तो वो जो 10% था, बिल्कुल, उसमें सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या था? उसमें what happened that you're like, okay, you know what, I'm not going to let this define me, I'm not going to let this negatively impact me? it was the pain. It was the pain that I endured during this injury. Yeah, that was the kind of thing that caught up in my mind and was forcing me that, you know, you won't be able to do this. When you got hurt, Yeah. you were riding a bike, and where were you? In Chilas. In Chilas. So Chilas से nearest मेडिकल फैसिलिटी तक कैसे पहुंची थी, और उस वक्त कितनी पेन में थी, और क्या हुआ था? अच्छा, I was in a lot of pain, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था, तो मुझे इस बात की खुशी थी कि नहीं। अच्छा, ये वही वाली ट्रेनिंग थी ना, बाइक से गिर के दिखाना नहीं है कितनी दर्द हो रही है। मैं गिर गई थी, लेकिन there were locals who helped me out. वो You were alone? No, I was with my father, but he rides on his own bike. I ride on my own bike, so he was in front of me. So he was riding Ahead of you. Yeah, ahead of me. So when I fell, my father came back, turned his bike, and there were lots of locals who came and helped me reach the hospital, which was almost like 7 kilometers away. So कैसे लेके गए हॉस्पिटल? उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी लकीली। थी, अच्छा, वो ईद का पहला दिन था बाय द वे। वाओ। तो वो अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा रहे थे, और उन्होंने अपनी फैमिली को वहीं पर उतारा सड़क पे, एंड ही हेल्प मी यू नो सिट इन हिज कार, एंड ही टुक मी टू द हॉस्पिटल। और वहाँ का हॉस्पिटल जो थे, मतलब दे काइंड ऑफ tried resolving and telling me that this thing has happened and just be at peace and everything is going to be okay. So yeah. और फिर ये सर्जरी हुई है लाहौर में? ये सर्जरी हुई है यहाँ कराची में। तो चिलास से कराची कैसे आई? That was a struggle. That was struggle. क्योंकि आपको ईद का दिन होता है, and then you know flights, वहाँ पर flight operations नहीं थे, ना ही स्कर्दू में ना ही गिलगित में. So I had to travel all the way from Gilgit to Islamabad by an ambulance, in an ambulance. Okay. And from there और ये गिलगित से इस्लामाबाद is at least, if I'm not wrong, 16-17 hours. It took us 24 hours. 24, oh my God, in that pain, Yes. you had to be in a car Yep. that got you to Islamabad. फिर क्या हुआ? बस फिर वहाँ से we had to book our flights. हमने बुक भी कर ली थी, everything was done, but then unfortunately they said that you won't be able to travel with the straight leg, क्योंकि allowed है अगर आप wheelchair पे properly बैठ सकते हैं. So I have to get onto stretcher case seats that are like 9 seats altogether that I had to purchase to be able to come to Get your stretcher Yeah. in. Wow. और कैसा लगा आपको ये इतनी सेलिब्रिटी स्टाइल एंट्री का? यानी आप सोचे एयरक्राफ्ट में एक स्ट्रेचर आ रहा है, 9 सीटों की जगह ले रहा है, उस वक्त क्या महसूस कर रही थी? उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी? I was happy that I am finally going to meet my mother, because she was not able to digest the fact that I got hurt that badly. So I just wanted And your to... father was with you? My father was with me. Your brother was with you? No, not my brother. I was वो तो traveling बहुत with my मजाक उड़ाता भाई तुम्हारा अगर साथ होता तो, है ना? वो मजाक उड़ाते हाँ, but लेकिन नहीं, he is more of a person, because he's the only sibling I have. So whenever I have troubles, I always go. He's my go-to person. So yeah. So now I say everybody who's met an accident या उसके साथ कोई life changing अगर incident होता है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी का chapter 2.0 शुरू होता है. बिल्कुल ऐसे ही। So इस 2.0 की chapter की theme क्या है, या इसका title क्या है गज़ल के लिए? For me, it's
accepting or adapting the change, and staying consistent and positive about the things that you feel, you want to do in life, and not just giving up. So in one word, I would say that would be, chapter is called resilience. Resilience, yes. Right? That you continue striving. Yes. ये सही हो जाएगी, we're going to get back on the bike, we're going to go for more adventures. Yes. Right? अच्छा, आमतौर पर मैं लोगों से पूछती हूँ कि अगर आपके ऊपर बायोपिक बने या ड्रामा बने, पाकिस्तान में ड्रामे ज़्यादा बनते हैं, तो आपका कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? बट फॉर यू आई हैव अ सरप्राइज क्वेश्चन. अगर आपकी लाइफ पे एक बायोपिक बने, who's going to play your father? Be my father? Oh, अब सोचो. that's a tough one. है ना? सोचो, बाबा को ही ले लें, बाबा को ही कास्ट कर लें. बाबा को ले लें, बाबा is amazing. है ना? वो एक्टिंग कर लेंगे. कर लेंगे, because one of his brother is he was into acting, he passed away. So sorry. But yeah, he was into media fraternity. अच्छा. Yep. तो अगर वो होते तो शायद वो प्ले करते, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल. बाबा को बाबा ही प्ले करेंगे. ये गज़ल का कहना है. So in the end, गज़ल, I want you to give a message to all the women out there, and खास तौर पे, because I see you're a beautiful person inside out. Thank you. And this conversation is about real beauty, it's about resilience, it's about being fearless. What's your one message that you'll give to all my viewers? I would say life is short, and just enjoy the little moments in your life. Try focusing on the good, and stay consistent to whatever you want to do in life. Be fearless and have that resilience, and just believe in yourself that no matter what the situation is in your life, you can do it. Keep pushing yourself.